अब मैंने कहा कि मेरा अगर उदाहरण ले ले कि मेरे माता पिता जाति के बारे में कुछ बताया भी नहीं मुझे और मेरी बहनों को। और मुझे जब मैं 11 साल का था, एक दिन स्कूल में ऋषि कपूर जो मेरा स्कूल का मेरा सीनियर था, उसने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? मुझे मालूम नहीं था। ऋषि कपूर ने पूछा। इस चर्चा में ईशान लाल भी मौजूद हैं। कुछ सवाल यंग जनरेशन, ईशान भी हिस्ट्री पढ़ते हैं स्टीफेंस कॉलेज में, थरूर साहब हिस्ट्री के स्कॉलर रहे हैं, स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हैं। तो ईशान से बोलूँगा इनके मन में कोई सवाल है इस किताब को लेकर भी और यंगर जनरेशन को लेकर। Sir, Stephanian to a Stephanian. क्यों नहीं? कब? I had a personal conversation with your former teacher, Dr. K. Shrimali. जी. So he told me that you are a unique species in the sense that you are a political academician and a diplomat rolled into one. So how will you see and place yourself in the tradition of political academic writings, and any advice for the youth? But most of my writing will be more considered to be popular writing rather than academic writing. But it is true that for some books I felt it necessary to back up my statements with footnotes. So there is a certain amount of scholarship embedded in a book like the Ambedkar book. My last book, The Battle of Belonging, which was about nationalism. I did a lot of reading of literature on nationalism. I had to put that in. So that one is perhaps more solidly grounded in political academic writing. And even some of my more polemical works like The Paradoxical Prime Minister, you'll find it's sufficiently sourced and footnoted. That I think is a good thing because it shows that you're not just writing off the top of your head, you have got solid basis for your conclusions. But if you ask me where do I situate myself, I mean, my concerns are the concerns of somebody concerned with public policy. I mean, they've been kind enough or bad enough to call me a public intellectual. I suppose that means that I'm interested in ideas in order to influence the direction of public discourse and public policy. So Ishaan, I would say that to that degree Professor Shrimali is totally correct. But if you ask me where I situate myself, I'd say principally as somebody engaged with the national conversation on issues that are relevant to the formulation of public policy, guiding the direction in which the country is going. So I don't talk about secularism, the abstract. I talk about secularism because it is such an urgent, morally urgent issue in today's politics of India. Need of the hour. And exactly. Similarly, with this business we've got of our, if you look objectively at something like my book, Why I'm a Hindu, it is not just my statement about my faith, which of course it is, but it has also been made necessary by the political misuse of Hinduism and Hindu identity and Hindutva by the current ruling forces and their sympathizers. So nothing is purely academic or scholarly for the sake of scholarship. It is there, it is done in a scholarly way, but it is there to make a point that is relevant for public policy discussion today. तो ईशान साहब और कोई सवाल? ये किताब है 200 पेज की महज किताब है और हिंदी में अनुवाद हो रहा है। मैंने ऑफर किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस किताब में असिस्ट करूंगा। 2 पार्ट में किताब है, आप ज़रूर आप पढ़ें। पहला पार्ट है बुक 1 लाइफ एंड द सेकंड पार्ट इज लेगेसी पे। कैसे देख रहे हैं अम्बेडकर साहब की लेगेसी को? अम्बेडकर साहब इसको बदल दिया। सही बात है कि वो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम मतलब रिजर्वेशंस SC STs के लिए लेके आए, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट 2 महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है संविधान पे जो अम्बेडकर साहब के मन से ही आया। एक है इंडिविजुअल एजेंसी, कि हर भारतीय नागरिक होते हुए, व्यक्ति होते हुए उनको अपना हक है, अपने अधिकार। योर राइट्स इनहेयर इन यू एज एन इंडिविजुअल सिटीजन। ये तो पहली बात हुई थी भारत। ब्रिटिश ने हमें नहीं दिया, ये अम्बेडकर साहब ने।